Yes, we are live. We are live right now, guys. Yes. Hello, hello, hello. Hello, hello. So many things. आते जाओ, सब आते जाओ. A lot of things to talk about. सब आते जाओ. पहले मैं अपना थोड़ा सेटिंग ठीक करूँ. मेरे पीछे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें दिख रही हैं जो नहीं दिखनी चाहिए. बट खैर कोई नहीं. जैसा दिख रहा है, I cannot do anything about it. But yes. Hello, guys. Hello. How are you guys doing? Episode Are we Hello. okay with 59. sound? Anybody check it, guys? Somebody So we has are to. It's good. All right then. So I mean, let's begin our conversation right away. A lot of things to talk about. But hello everyone. Good evening. This is Offside Tech. This is episode number 59 that we are doing right now. We are almost in our 60s right now. So please consider subscribing us. If you are watching the stream, please consider to like भी कर दो so that you know the engagement वाला thing happens here. Like से आजकल हो रहा है सुनने में आया है वो भी कर दीजिए. And if you are new by any chance on the Offside Takes, please consider subscribing to the Offside Takes as well. A lot of things are in the description. You can go over there and you know you can join our Telegram group. The link is over there where we discuss football 24/7. You can follow us on Instagram Offside Takes FTBL where you get all the football related news. So this is me, Shriharsh, and I've been joined by three of my really good friends. Mittul will not be part of this stream, unfortunately. So love you 3000, bro. I hope so. Next stream में आएगा वो. This is me, Shriharsh. I've been joined by Bishal, Shreya, as well as Siddhant, and we are right away jumping into the topic because a 4 game week before the conclusion of the Premier League, we have a winner in our hand. Liverpool have been crowned uh, as the champion of England. I think something is happening on my end. Just as I started saying Liverpool has been crowned, something happened in my end. No issues. So I just saying that Liverpool has been crowned as the champion of England for the 20th time in their footballing history. A season that has been, you know, staple made for a lot of first time PL manager. Arne Slot has definitely did the unthinkable. Particularly, the core of the squad remained the same. It was what it was before with whatever the rest Klopp has managed. But it took Klopp a lot of time to, you know, win his first title with Liverpool. But Yep, yep. say no more for Ancelotti, guys. Straight away, what a huge accomplishment! Not only for club of Liverpool stature, but for Ancelotti because he had a lot of things riding on his back before the start of the season. I think when we had done a prediction for this season, Yeah. I don't think anybody would have said that Liverpool will win the league this time. Everybody was like, it's again gonna be City and Arsenal because Hmm. these were the two fighting for the title. Liverpool had not been in that title conversation for the after 2020, Yeah. and um, Onslaught coming in for this first season, Klopp leaving, nobody knew what will happen, and the I think we have seen two examples of clubs changing long-time coaches, Manchester United and Arsenal. And after those two coaches left, the next few years were pretty horrible for both those teams. So this was always a scare that okay, the team is good, but once the that coach leaves, who was there for so many years, you might they might not be able to do this exact same thing that they're doing now. But Arne Slot, I mean, hats off to him. Hats off starting Klopp because he had built the team. Uh, जो the reason that you can say कि core team अभी भी same है क्योंकि actually में है this entire team is the same. Their only signing this year is Chiesa, who has not played. Gravenberch. Gravenberch was last year. He Is was it? injured entirety of last year. But he didn't play a lot during Klopp. But this season 22 क्या है? सिर्फ एक Chiesa. That's it. Zero buys, entirety of Klopp's team, but that team that Klopp had built, that midfield refresh कर दिया था, strike options refresh कर दिए थे Klopp ने. So he set that base. Slot came in, implemented his football, and kudos to the players like to adapt to what the new manager is saying, to understand that immediately, and to But I implement don't that. think I don't think the slot में उतने ज़्यादा मतलब playing style में changes किए because it's
Like still looking to what Style Klopp is still a Klopp. bit different to Klopp. Klopp is proper gegenpress, right? Klopp is you don't have the ball, that means you have to go and get the ball immediately. Slotted is a little more loose with the ball. He is like, okay, it's okay if you don't have the ball, but get back, try in transition. If transition is not happening, then position बना के वो दो के gap में जा जाके मारो. But kudos to these players, kudos to the manager. It hurts as a United fan, uh, because they are equal in that we had a anthem for it. 20 times Man United is our chant, and now Liverpool also comes in that part. So it's I obviously, guess it's time to retire that chant as well. ha. So as a United fan, especially, and like what a season for Liverpool to win this league, where their biggest two rivals are at the absolute bottom, Everton and Manchester United. एवर्टन एंड Yeah, मैन यूनाइटेड के yeah. पॉइंट्स ऐड कर लो तो भी लिवरपूल जितना पॉइंट नहीं होता. Never thought you would say that. I know. I know. I mean, it's very obvious as well when you are at the dead at the bottom at the last. I mean, I get it. It's still a achievement, but I mean, ये तो But होना ही था ना मतलब. that's like the just the cherry on the top कि हमने सीजन ऐसे टाइम पे जीता and equaled with United, where United were at the rockest bottom till date. Okay. They have the bragging rights. ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये Big लोग कर time. दिए. This season is their absolute bragging right, because again 2020 में they won the season, they won the league, but they couldn't celebrate it with their fans. बस परेड नहीं निकला था, कोई celebration नहीं हुई थी. This अब सब is होगा. this अब is a सब होगा. proper title league Yeah. win for them. Yeah, like actually good on slot actually like improve these people. Uh, Klopp and Slot both get like points each for getting this team to win. And it was like they also, I mean, I don't want to say that they were lucky. They played some good football, man. Like it's not like they were lucky all the time and they won, like so many games. And being 15 points ahead in the season already and winning 4 games with 4 games in hand, that's like great. And after 5 years, I think this is what like if I was a Liverpool fan, I would be happy if like every 5 years you're winning some cups, you're winning the league every 5 years because it's competitive. And Arsenal were the only ones who could keep Liverpool on their toes. So in the entire season, like no one But else. not for long. नहीं I देने mean, वाला था. you know, They guys. they had their they Yeah. had their drop in form. Where after that it was always like अभी तक तो confirmed था कि हाँ भाई लिवरपूल ही जीत रहा है. हाँ. It's a matter of when. Yeah. Arsenal had a dip in form. Arsenal, I don't think had a dip in form. They were unlucky. It's not like they played No, bad no. football. They had No, a good yeah, dip in it's form. not unlucky. I don't think so. You know, they dug their own grave. To be very No, honest, again, I feel. this doesn't happen with luck. मतलब एक दो पॉइंट का ठीक है होता है, ठीक but है 15 पॉइंट यार बहुत And एक सेकंड चेल्सी में होते हुए तो उनको लक फेवर मत कर तू उल्टा बोल. But not only that, so the thing is, I want to now come to the players, Hannah. And the biggest factor that this team has won it, There are some leaders. it's Salah. It's Salah, Salah his went. constant goal scoring form, which I at times कभी कभी dip हुआ, but इतना dip नहीं हुआ जिसने टीम को cost किया, है ना? It was persistent. Even if he was not scoring, he was assisting at times, and he was doing all of the other things that a player of his caliber has to do. So eventually, what do you expect? What do you say, guys, about Salah's No, contribution like and about other players? Salah is so important, and Liverpool board really had to pull their strings to like keep him, man. Because yeah, like Salah, other than England, is like underrated, and this has been a conversation for all Liverpool fans. I think all the time that Salah has been overlooked as a very good player. He's the best fucking winger in PL right Yeah, now, we and have we have already admitted this like yeah, we already 10 weeks ago or something. हमने पहले बोल दिया. अभी and वो that's not one like off भी हाँ, आपको and, वो हाँ, one off भी लगाने की जरूरत नहीं है. He is that good a player yeah, in the league. One off भी नहीं लगाएंगे तो correct. भी चलेगा. So Liverpool had to pull their strings and slot के लिए this is very good and this is big. He is not only like
a pivotal player on the pitch, but mentality bhi hai. Salah has been a fucking winner with this team, and like बहुत कुछ चीजें दिमाग में आ रहा है, but yeah, again, but good on slot that they get to keep. Slot will stay. Salah is also staying, so they had to pull a lot of strings, as I said. But अच्छा है भाई, मतलब बहुत फाइट कर करके साला को मिला जो मिलना था, I think. And now that a lot of other players are also leaving, it makes it better for the board and all, in a financial way to like keep them. But again, like Pool lost, even though this they won the Premier League now, they were almost on a treble, and Yeah, they yeah, lost they were. out to. So that is when we saw the dip in form. Yeah, Actually, that's when yeah, we saw yeah. Liverpool's dip in form, and that's when you can see a few cracks that are there. But they pulled through for Premier League, which is great. Like good, great for slot again, because it's Uh, just depth. because Bishal just mentioned a few moments ago that in the start of the season, when we were doing our predictions, particularly for the season, we were very hesitant of not giving Liverpool the मतलब अपने prediction में we were hesitant because we thought a new manager has come in and the ideology of the team has changed a टाइम few लगता है. in ingoings and outgoings and you know and a new bunch sort of एक जो नया जो क्लब बना के गया पहले से थोड़ा 2 साल पहले 3 साल पहले की इन्वेस्टमेंट. So they were coming into the team. तो हम लोग को नहीं लगा था at any cost कि ये सीजन लिवरपूल का होगा. But man, balls to get this team rolling from the word go and not so the dip in form that happened, it happened in like late Feb and early March before But the last winter. it started with the PSG game that happened, and then Yeah, that it it and then just it went went down. downhill only. Yeah, But why na? See again, this is the difference. Uh, I'll bring a sad reference, but the same thing that I had told you about Maresca, right, Shriharsh? कि एक बार जो depend form आता है, it will depend how the coach makes the team bounce back. Maresca was not able to do that. Oh, Slot did Dortmund that Maresca. immediately. Lol. वो तो भड़वा है भड़वा. no, because two managers, two high profile managers, I must say that no, so sorry, two managers who were managing high profile teams, new managers. So there will be comparisons of Maresca and how Maresca managed with a lot of budget and No, no, I no, don't think Maresca is no, no, not at that level at no, all. I'm not saying that thing. Even यार आर्न स्लॉट भी फेयरवुड से आया था. इट्स मतलब अगर आप ये भी देखो तो वो भी इतना कोई लेवल नहीं है एरेडिविजी से उठ के आना. So Correct. I mean, if you're going to draw parallels, you have to consider Maresca in one end where he was given budget, where he was given opportunities to sign, हाँ, to ये have फनी players. है कि बजट है ज्यादा, लिवरपूल से था ही. नहीं, हमको लिवरपूल तो साइन ही नहीं किया श्रेया. उनके पास तो हमको पता भी नहीं उनका बजट क्या था. करेक्ट. उनकी तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी. बट सो मतलब एक पैरेलल हमेशा ड्रॉ होगा. नाउ कमिंग ऑन टू आर्सेनल बिकॉज आई वांट टू लाफ एट देम. They have done the three-peat of finishing second. That is the best. I अच्छा, mean, 3 years में सेकंड three Yeah, फर्स्ट जर्सी. back-to-back seasons second finishes है उनकी. ये third है उनका. ओ, I फिर mean, तो ये टेबल, हाँ हाँ, ये man, अच्छा था. everybody thought that this will be Arsenal season because they looked more, settled. I must say in the last season that अब तो हो जाएगा. ठीक है, 20 साल से 22 साल से नहीं हुआ, ये सीजन हो जाएगा. And still you find a way to fumble the Premiership and then the other competitions that you played. Wow, Arteta ball. So funny सलाम looking है at सर. Stuart wearing a Liverpool jersey though. हाँ, but dude, वेंगर इनको फोर्थ लाता था, आर्टेटा सेकंड आ रहा है. उतना तो अपग्रेड हुए बस वो. ये इसको आप अपडेट गिन लीजिए कि तो इसको ये आप ऐसे ही हो नहीं सकते भाई, आप तू अगर ये तुम भी समझ. पार्टी एक्सटेंशन दोगे, पता है. ओसानी, जितना पैसा आर्टेटा ने अपने पूरे करियर में नहीं खर्चा किया होगा उतना सॉरी आर्टेटा बोलता हूँ, आर्ट्स वेंग. Wenger. वेंगर ने अपने पूरे मैनेजरियल करियर में नहीं किया होगा उतना इस आर्टेटा ने 2 3 साल 4 साल में ये रीबिल्डिंग के नाम कितना पे किया है. 2019 से कब से? 2020 2020, हाँ वो कोविड सीजन से है. 2019 नवंबर दिसंबर की तरफ ये सैक हुआ. नहीं एवरी एमरी सैक हुआ. एमरी तक किया. भाई, ये ऑलमोस्ट 5 साल से. आर्टेटा एंड ओले काइंड ऑफ केम आजू बाजू में. ये 5 years से ट्रस्ट द प्रोसेस. हाँ हाँ हाँ. एंड द प्रोसेस ऑलमोस्ट या ना दिस सीजन But, देने but, वाला but था don't उनको. you feel, don't you feel jealous? I'm jealous. अबाउट I'm jealous about Arteta getting always, like, he's still being there. He's getting them second. कुछ तो कर रहा है भाई. अगर टूकेल को अब तक रहने देते ना 5 साल, मैं तो बहुत ही खुश होती.
मैं तो बहुत I ही mean, ज्यादा That's a I will say the media perception I'm is still jealous. not negative about Arsenal. I mean, fumbling the league 3 times, and still the media, they are the I'm going media to boys, I and they मैं are तो loved by चाहिए the I'm going media, to sort say, of. हो Shreya, गया. I'm going to say to your club only, it's a you problem. तेरा ही dialogue है. Yeah, it's a It's you. a you. Yeah, yeah, it's a total you problem to the club. It's a total club problem here. वो Yeah. तुम्हारे क्लब का आइडियोलॉजी है ही नहीं कि भाई इनको टिकने दो ज्यादा. निकाल Yeah, दो. and also, by the way, stat Arne Slot is only the fifth manager who has won the Premier League on his debut. Guess the other managers. कॉन्टे, आपका क्या बोलते हैं अपना मोरिनियो, दीज आर द Correct. अदर, है ना? दो तो मैं बता दिया आपको नाम, मेरे को दो और Conte, याद नहीं आ रहे. Yeah, two uh, more. ये नहीं, not Leicester. Oh, dude, there is a comment पेप by पेप Krish. पेप था. There is one comment by Krish that I want to read. Yeah, Arne Slot is singing Jurgen Klopp la 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 la. Jurgen Klopp did the same thing after last year. Because अब Jurgen Klopp क्योंकि used to अभी हम लोग यूर्गन क्लॉप का, मैं अगला क्वेश्चन वही पूछने रहा था आप लोगों से, मतलब व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? रुक डोंट जा यू रुक थिंक? जा, दो अच्छा और अच्छा, क्विज दो चल और रहे नाम बताओ पहले से. हैं। तो और जीता कौन है? दो क्या और पेप है. पेप नहीं है? पेप नहीं है उसमें? पेप नहीं है, नहीं है. पेप नहीं है, पेप नहीं. मैंचीनी didn't win his first season. No. हाँ. रेनियरी इज देयर? नहीं, फर्स्ट सीजन रेलेगेशन फाइट किए थे वो. अच्छा I'll अच्छा. give. I'll say one name. Ancelotti. Chelsea. No, है. with Chelsea? No, not with Chelsea, I Not guess. with Chelsea, I think. है? No, no, Has to be Chelsea with only. Chelsea. हाँ, Chelsea only. 2011 होगा. अच्छा 11 वाला, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक. एंड 11 नहीं, सॉरी. और पहले है थोड़ा सा, पोस्ट मोरिनियो, आई गेस. हाँ, That post Mourinho. पोस्ट मोरिनियो. And हाँ वही. एंड द अदर नेम? I said Mancini गलती से. Pellegrini when he came to अच्छा Man City. पेलिग्रीनी, हाँ हाँ Oh, पेलिग्रीनी. Aguero. हाँ, that 2012 that was 13. his first season. That was First. Pellegrini's first season. Wow, So these are nice. the four coaches who have So, won title on their हाँ, debut, and हाँ. Ancelotti becomes the fifth. Yeah. So now my question to all of you guys, because see, मुझे ये लगता है, मैं इसमें highly, I feel like ये हुआ है. Don't you guys think कि यूर्गन क्लॉप बहुत जल्दी टीम से चला गया? आई गेस उसकी टीम अब शायद बन गई थी, या फिर उसकी टीम was about to come. He has done his job. He won the UCL. He won the league. And I mean, these are the two only major accomplishment for him. Two major accomplishment. भाई but not तू 9 साल में उसने फर्स्ट ईयर से जो टीम इनहेरिट किया हाँ था हाँ हाँ, उसके बाद से वो तो जो एक है, changes है. वो तो एक है, indeed है. आपके लिए this always stays that the key Klopp, when he came, he said within 5 years I'll win this team its trophy. हाँ हाँ. So this was his first press conference. 5 years. Yeah. In his till the first 2 years they didn't win anything. Fifth year में they won the UCL. फोर्थ ईयर में यूसीएल, फिफ्थ ईयर में लीग. Sorry, fourth year में UCL, fifth year में PL. हाँ, back to back. Yeah. Same अबे year. साला तब से फोटो ही ले रहा है भाई. साला तब से सेल्फी ही ले. अच्छा. Dude, just think about it. ये साला बोल रहा है, मेरे पे दारू मत फेंको, मेरे पे हाँ दारू हाँ मत फेंको, हाँ. मैं अरे मुसलमान है, अरे मत कर. नूनेस Bro, को दारू bro, मत फेंक. Salah was bought at fucking 35 million, Yeah. Sheesh, man. and he's a club legend right now. Absolute. Yeah, that's what they had to do everything to like keep him. Salah, these 35. guys, yaar, Salah, VVD, what are these guys? Allison. Bro, I'm going to hate VVD and Allison because they scammed us with Coutinho. हाँ, तो साला अभी स्क्वाड Yeah. सेल्फी. मस्त पैसा तुम They, लोग को they देना पड़ा. invested that money into VVD and Allison. ये नेमार का पैसा यहाँ गया था ना, नेमार का पैसा यहाँ नहीं. आया था. Coutinho का पैसा उन्होंने बांटा. नेमार का पैसा कुटिन्यो के लिए, कुटिन्यो हाँ. का पैसा VVD एलिसन के जीवीडी लिए. है, हाँ समझ गया. दिस इज द फ्लो अरे ऑफ. अरे का प्रोडक्ट It ended well for them. Yeah. Oh, Yeah, indeed it did. I guess we should also move on. Props Yeah. to Liverpool for doing the unthinkable, as I said. अरे यार लिवरपूल फैंस है हाँ भाई. कमेंट्स ले लो.
Now comments में ठीक है, the same old lot is there, and क्या same Chris is old lot? saying पढ़ लो the भाई. नहीं नहीं mutual respect Liverpool and their staff and managers give to everyone is so inspiring. Chris is saying about that. वेट Uh, वेट रुक, मैं ही पढ़ती हूँ, तो रहने दे, रुक. yeah, go ahead. 20 times कहाँ से पढ़ूं भाई. हाँ, क्लॉप वन एवरीथिंग विद लिवरपूल. व्हाट डू यू मीन ओनली टू मेजर ट्रॉफी? अच्छा, तेरे लिए है वो. By that I said कि दो major trophies. He won all these things, but two major trophies. मतलब on Also, his Krish, yeah, cabin. I think Salah is a brand ambassador for Pixel, so that's why I think he's taking photos on the Maybe. Pixel. And Pixel in general is the like मतलब everything. आले भाई मेरे को याद हो गया था बीच में अब ad तो में वो. ये अलग Actually, pixels है. I wanna reply to Rohit saying is Lavia and Kaisedo fit. Would love to give them see a guard of honor to Endo. I know why he's saying that. मतलब ठीक है, मैं समझती हूँ, See, but ठीक है, Rohit, it's fine. this Like, is the doesn't difference. matter though. Like, we You, don't even you think that way. yeah, you have just won the league, man. Like, Enjoy why it, are you yeah. upset? How are you still trash talking Yeah, about it? exactly. I guess he has a different avatar. I feel his avatar is different when he is coming over here and he's writing these all this thing because he knows that some or the other one will I get think triggered he was eventually. like bait us into like saying No, shit, I but mean, no man, like yeah, he made Bro, such just one thing to him. Go and celebrate your title. Don't yeah, come man, here and just congratulations. You It's never know when you guys will win the next one. You you never guys won. know. You never Totally know fine. when you guys will Stamford win Bridge the में next. तो नहीं जीते लीग. जीत तो जाओगे next week वैसे. Yes, Chelsea play. I mean, can we move on to Chelsea now yes, because like yes, let's move on in the league. No. I Chelsea think instead of Chelsea, we should talk about the CDR final. That was the नहीं, burning दूसरा topic. PL में है ना, इसीलिए. हाँ PL finish करके So, yeah, Chelsea nicked 2 games in a row, 2 wins. Thankfully, didn't watch any of those games, that's but I think the winning portion for you to not watch yeah, any game so that yeah. Next they four win. is where we are going to, Yeah, be next four is tested. I don't know, test for staying in top four or top seven. 4 to 7 में कुछ भी हो सकता है. I think the table is too tight right now. There are few games coming up which can topple us or we can go down. But personally, I am happy being sixth or seventh. I would love to be sixth or seventh. Monetary wise, I know a lot of arguments are there, but this is just my personal opinion. मुझे पैसे वैसे की फर्क नहीं है. मैं क्लब नहीं चला रही हूँ. मेरे पैसे तो है नहीं. So I care about like just some good football. I am fine playing sixth or seventh as that team. Like in not, I don't want Champions League. So You're anyways getting I mean, Europa. and हाँ. yeah, we getting win, Europe, but then playing in Champions League, these are two different things, Usani. I mean, I would like to play तुम अगर Champions League फोर्थ भी also. फिनिश नहीं कर रहे हो तो तुमको यूरोपा मिलेगा कॉन्फ्रेंस जीतने पे. हाँ तो Correct. कॉन्फिडेंस जीतना चाहिए ना. वो भी टफ है. जीतना चाहिए. I'm not sure, bhai. The way we are जीतना playing, it चाहिए. I could hope go we play haywire very easily. we win conference, or else The I hope we teams that you win played conference right league. now, you play. What is that team's name? Zorz, अरे Jurgard but or Zorzix, something. that is Final also is Zorzen, obviously we will reach Zorz, the we something. will reach some stage na with some better teams. final is the fun. Fiorentina या फिर Betis. But It will that's be the कब भी thing, na. जीत And जाएंगे. both of those, कब भी no, जीत bro. जाएंगे. See, this is not the way we can take, man. Both of these teams are in good form. By Betis में अपना Isco and this guy, this my goat दो Anthony is दो killing जन it दो in जन पूरा Betis, टीम bro. नहीं चला सकते मेरे भाई. भाई मेरे, तू चेल्सी को भी तो देखना अभी. कैसे हाँ, कैसे तो जीत Chelsea निकाल का रहे हैं अगर अभी हम. फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन वाला फॉर्म होता तो इजीली बोलते थे कि तो हाँ. मैं हाँ भाई अभी सेकेंड हाफ में तो क्या ही खेल रहे हैं मेरे को भी नहीं पता मेरी टीम. आई डोंट रिकॉग्नाइज माय टीम एनीमोर ऑनेस्टली. But yeah, nothing else other like exciting games other than today for United. I mean, in this week for PL, but other than today's game with Bournemouth versus United, where Bournemouth were red carded in the 70th minute, Evanilson red card, and then Hoylund comes back and scores in Fergie time. So good for United. I guess I'm not happy Very about it. important 3 points I guess विशाल भाई for you. I mean एक भैया. अच्छा तो Hey, 2-2 it ended. अरे sir, see, 1-1. I'll tell you, I for You know, this Bournemouth were winning it till 90 plus 6. Can you believe it? No मतलब I can believe it considering it's United nowadays. I can believe it. नहीं, Sad. I'm telling you, Sad. like the first I'd say 25 minutes जब तक बोर्नमथ ने फर्स्ट गोल नहीं किया था, it looked like a proper 10th versus 15th match. हाँ. Bournemouth was absolutely dominating.
गोल पड़ने के बाद then something clicked in United and United was actually playing better, creating chances, but भाई अपने को गोल ही नहीं मारना है तो क्या ही करे यार, फुटबॉल में गोल ही नहीं मारोगे तो कुछ नहीं हाँ होगा. मतलब you do everything right, you have like 80% possession with you, but if your end product is not तो goal, भाई then sorry. मोरिनियो बोला था ना, हाँ, 80% possession, you take रहने it. दे उसको, I आई take एम it. टेकिंग द 3 points. Exactly. Yeah, like and this is very strange. I'll tell you a few stats. अच्छा, today also XG हमारा बहुत ज्यादा, बहुत काफी ज्यादा. भाई Okay, तुम पूरे सीजन में एक्सजी के ऊपर खेले हो साला, बट गोल नहीं मार रहे हो. exactly. But today also like Bournemouth, Amorim ball is currently ki please go 10 men so that we can win or we can draw. Bro, he has a very crucial window in front of him. This is also my question. Like ऐसा क्या ही उखाड़ लेगा ट्रांसफर विंडो में कि अगले सीजन यही गधे अच्छे से But the next season is going to be make or break for him. It is, it is. Now the funny thing is, so this is some has to be some psychological problem because I'll tell you, in 34 matches, we have scored 39 goals in PL. Okay? In other competitions, which is FA, Europa, and Carabao. Carabao, we have played around some 20 matches or something, or less than that, in fact, less than 20 matches, we have scored 44 goals. Oh. तुम्हारा पूरा फायर पावर तुम कहाँ पर इसमें रख रहे हो. And like PL में क्या हो जाता है इनको भगवान जाने यार. Like how do you not score? एक तो वही same thing that I was talking last week also मितुल के साथ and on the stream in fact कि our losses, the way we are losing goals is all because of individual head loss. Some or the other guy will have a complete head loss which will result in a goal. ऐसा नहीं, ऐसा कम ही हुआ है कि opposition बहुत वो इंडिविजुअल एरर्स की वजह से ही तुम्हारे गोल्स हो रहे हैं. बहुत होते हैं. And today also same. Onana passes to Luke Shaw for some reason. Luke Shaw hurriedly passes to Dorgu for some reason. And Dorgu also clear करने के जगह उसको लड़ाई करने के चक्कर में बॉल लूज किया, बॉल गया सेमिनियो के पास, गोल. You used Luke Shaw and Dorgo in the same sentence. लूक शॉ एक तो भाई 1 साल 3 दिन बाद स्टार्ट किया है पहली बार यूनाइटेड के लिए. और वो भी सेंटर बैक, वो एलसीबी स्टार्ट किया. भी स्टार्ट किया और उसके बाजू में डोरगू. But yeah, I mean, very. Wait, how did your favorite Dallo play? Oh, the reason Luke Shaw is back is because Dallo is injured. Oh, Mazraoui खेला right? Mazraoui खेला right. Also, one other match that I want to specifically, and because it was also mentioned in our chats, it was Brighton versus West Ham. So till 83rd minute, or you can say 89th minute, West Ham was winning it 2-1. Then Gruda was brought in at 82nd minute as a sub, and he assisted both the 89th minute equalizer and the 90 plus second minute winner. So I mean Brighton from the ashes, they just completely won the game against West Ham. So I mean हम तो पहले बोल चुके हैं शायद ब्राइटन का हो गया ये सीजन, ब्राइटन का भी हो गया, ब्रेंटफोर्ड का भी हो गया ये सीजन. But again, to have such form particularly, and you know, अभी भी आप देखोगे तो I don't think so that anybody else is getting the 7th spot. I mean, Fulham is like 6 points behind No. Aston Villa. Brighton is also 6 points behind. So I don't think so that anybody is gonna get that 7th. Actually, even Brighton got the better of their ex-manager. Yeah. Oh yes. That has been really poor, man. Potter नहीं भूल ही गया था भाई, Potter भूल ही गया था, Potter was there मैंने. Potter horrible. Like ऐसा तो गोल लोपेटगुई को ही रख लेते इससे. Exactly. भाई तुम तो बोलोगे, पर हमको तो ये भी याद नहीं था चेल्सी में था. अरे भाई चेल्सी वाला याद है मेरे को, बिकॉज जब I भाई वो hated अच्छे से याद है, more वो at अच्छे that से time. याद है मेरे को, क्योंकि भाई टूकिल को सैक करके हरामखोर लोग लेके आए थे इसको, तो वो तो भाई जिंदगी भर याद रहेगा मेरे को. वो तुम्हारे इस पे वो था, वो थप्पा था एक कि भाई I mean, पॉटर that's वो the रहेगा, that वो था That's the जिंदगी lowest भर के factor. लिए.
हमारे माथ जैसे बोलते नहीं पुरानी पिक्चरों में कि तेरा बाप चोर है करके लिख देते थे हाथ में, ऐसा है हम लोग ने कि हम लोगों के हाथ में लिखा हुआ है चेल्सी फैंस की कि तुम सालों ने टूकेल को सैक करके पॉटर लाया था। हमारे जिंदगी भर का धब्बा है, हमारे हमारे जिंदगी भर का। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, हाँ, also हाँ like this draw was huge loss for Bournemouth because this has completely thrown out their season now. अभी या तो बॉर्नमouth का भी हो गया, बॉर्नमouth का भी हो गया। they had a Maybe. good purple patch mid season. Yeah. और उसके बाद Mid-season, वापस correct. injuries, suspensions. Now, another thing is the FA Cup games happened. ओ Yeah. यस। Crystal Palace versus Aston Villa. Oh, भाई they क्या beat the मोमेंट पे shit out हागा, of Villa. क्या मोमेंट पे हागा है मेरी भाई साहब, 3-0. and like deserve it yaar, like Crystal Palace were absolutely fucking playing out of their mind. Brilliant they were yesterday. That goal by nahi, Eze. सबसे पहले Eze, amazing goal. Sar, good goal. Sar was absolutely running up and down the Mateta bhi I think mara. huh? Mateta also scored I think. Also scored. Sar was completely running up and down the pitch for a very long time. He played really well. But yeah, Aston Villa a little sad. I Like mean, it's the same thing you can say about Nottingham Forest as well. We don't have Nottingham Forest till I die with. मत भाई आप भी हार गए 2-0। आई मीन टू ऑफ द सरप्राइज जो सरप्राइज टीम थी इस बार की, आई मस्ट से इनमें से तो तीन टीमें सरप्राइज है मेरे लिए। ऑनेस्टली बताऊं इतना दूर तक आई वाज नो वे सीइंग देम। क्रिस्टल पैलेस, so they are gonna face City in the हम finals. We have the finals locked and loaded for FA Cup. तो आई गेस मुझे नहीं लगता, हम लोग को लग रहा था कि शायद इतने खराब सीजन में तो मतलब उसके बाद भी दे आर गोना हैव एटलीस्ट वन डोमेस्टिक कप टू देयर नेम। आई होप सो। ये वही है ना, ईटीएच वाला फंडा। आओ सिक्स कुछ भी आ जाओ, एक तो ट्रॉफी नहीं, अरे कैराबाओ कप जीत गया, अरे भाई ये दो दो वो तो At जिंदगी भर least बोलेगा मैंने नहीं दो at least जीता है ऐसा भाई। होगा कि Pep is not trophyless. हाँ हाँ, Yeah, he's not actually going trophyless. like even in his worst season he is not trophyless. Trophyless, yeah, yeah, indeed. So I mean that is the thing with the English football. I mean 4 more game weeks left. Nottingham Forest, yeah, huge dip in PL also. Because if you Yeah, think about it, हाँ हाँ। Nottingham Forest was एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, आप बोलते जाओ तब तक। third, comfortably third. Now they're scrambling around. They are seventh right now, or sixth rather. Var check. Huh, I'm doing the war check, but in the meantime you guys continue. they must be sixth right now, which is mental. Like they Six, had they that are six. They purpose. are six right now. Yeah. They have They absolutely confirm third का बात चल रहा था और यहाँ साला sixth पे गिर गया. exactly like the way City has caught up, the way Newcastle has caught up, the The way way Chelsea Chelsea is caught up. also they are also Chelsea is getting catching up. points. It's crazy. Bro, we've spoken about Forest. We spoke about Liverpool also. The team Liverpool beat the shit out of to win the league. Bro, what the fuck was wrong with Spurs, man? Oh, bhai. So what I Spurs, can see here about Nottingham Forest from match from game week 16. I mean huh. it was like around November-ish, December-ish. They were at the third position and they were constantly in the third position for like 14 weeks straight. Third से नीचे नहीं उतरे कहीं उन लोग. And then the moment you decide to drop your form, it's post the match week 29, and now you see them. They are at sixth position. Unfortunately, मतलब हम लोग को तो एक समय लगा था that they were charging for the title. The only ones near about uh, uh, to Liverpool, they were the only ones. So I mean यही होता है यार. That is what football is. But yeah, Richard, you were saying something. Right. Uh, okay, and now moving on to the other final. Yeah. Uh, Osani. This was a tougher fight than you would have expected. But we still beat them. Yeah, But Barcelona. what a They game, had man! But so as a much neutral who has watched, I was in half sleep. I was watching it till 4:15, 4:20 in the morning, early morning. But what a game, man! What a game! Brilliant Hands I'm match. down, glad I It didn't it, think it absolute wasn't cinema.
it wasn't one-sided for sure. It was the old Clásicos भाई wala साहब, vibe. Real Madrid was winning at one point. So I mean, I was not expecting it any time around. So I mean, just summing it up, first half belonged to Barcelona. They were completely, होता नहीं है कि कोई चांस नहीं था कि रियल मैड्रिड एनीवे इस गेम में आ रही थी. सेकेंड हाफ आई डोंट नो, एंसेलोटी भाई ने कुछ अंदर में जादू चलाया, जादू की छड़ी. एंड भाई सेकेंड हाफ में दिस टीम केम ऑल आउट ऑफ ब्लू. भाई दैट उसने एम्बापे उसने आंख उठाई, उसने I आंख said, उठाई. Mbappe, and to be very honest, this is also a moment that we should acknowledge that page on Twitter that has Mbappe scored a free kick that has to be renamed to has Mbappe won a UCL because that I Mbappe oh by fucker the way, scored a free he kick. didn't claim it. वो बाद में अपने से कमेंट किया कि this is not me, ये कोई और है. मैं अच्छा, अभी I'm my thinking of bad. retiring. I'm thinking of retiring the Retire, bro. account. He actually asked around कि anybody wants to buy this account, DM me. Oh man, so sad, so sad. As you know, every love story has to come to an end, and this story also has come to an end. But yes, man, Mbappe scored a fantastic free kick. I must say, it was not again that fantastic. Again, उसको थोड़ा सा side वो I guess pole touch करके अंदर गई, But but yeah, still it still was it was good. a very good free kick. Still a very good Then free kick. the second goal that Shumeni scored, fantastic late into the box header, that was fantastic. Very good. Bro, And but Chesney was completely, I mean, he was wrong legged. उसका वो अलग ही उधर वो move कर गया था उस point पे. bro, you all the three goals that Barca also scored were Was crazy, man. Why that What Pedri goal? backbone. How could you, man? Wow. भाई Pedri वो shot, man. What a पे- shot that तू was. वो छोड़ भाई, यमाल का बॉल टू फरहान टोरेस. Oh, yeah. Oh, Yeah. That's ball to Torres. Oof. man, एंड भाई यमाल बालों में क्या कर क्या गया आया किया भाई? भाई. मैं बोला ये हंस क्यों दिया अपने बाल में? क्यों हंस अरे के अरे लगा लिया हाँ, उसको अपने बाल में? खराब क्या क्या He क्या took noodle hair Ronaldo to another thing only. Also, I saw something very, suspicious happen in the first half itself. एक हैंडबॉल लगी थी इनसाइड द बॉक्स. सम प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड ने हैंडबॉल किया था. ही वाज फॉलिंग एंड हैंडबॉल थी. इट वाज नॉट गिवन. एंड आल्सो व्हाटएवर दैट हैपेंड विद रूडिगर throwing that bottle and पता नहीं क्या क्या तो नौटंकी हुई है पूरे गेम में अराउंड. तो भाई बहुत ही तुम साला 3 बार खेले हो, 3 बार नहीं हराए हो, ठीक है गुस्सा करो, कोई दिक्कत नहीं. मारो रेफरी की मारो. हम yeah. जीत गए, 2 डोमेस्टिक कप जीत चुके. आई एम हैप्पी. Yeah, like Barca have been so much better this season, I feel like, than Real Madrid. And sometimes to watch Madrid's humiliation is feels good, man. It's actually good. No jokes at me, guys. But yeah, like नहीं नहीं, आज अभी तो फाइनली बारसा के लिए थोड़ा अच्छा बोल रही है तो हाँ, मैं लिटरली बोलने वाला था. नाराज है. ओसानी मैं ओसानी रो सुन रहा दूंगा. है कौन अच्छा बोल रहा है इसके बारे बार्सिलोना मैं के बारे मैं में. रो दूंगा भाई, स्ट्रीम पे रो दूंगा मैं. वो बट नहीं. देखो अच्छा लगेगा. We, But no, like I feel like नहीं भाई मुझे बोलने दो. I did not watch हाँ yesterday's हाँ, game. गो फॉर इट. Oh, like, yeah, well done, Barca. Also, like the way better team out there, they have achieved something else only with Hansi Flick, and I think Hansi Flick is a way better coach than Carlo is, and Carlo ka thing is dipping, and like his coaching style, or it's not only about the team or having injuries and all that, but like I think players are more invested in other things rather than playing some good football. Like Barcelona is, I think, more disciplined in their football, in their way of playing. Like every El Clasico and throughout the league also they are showing it. Real Madrid are always like कि भाई बाहर कुछ चल रहा है हम उस पे ज्यादा फोकस करेंगे हम अपनी गेम पे तो फोकस नहीं करेंगे. हाँ. And I might receive a lot of flack for this. Once you speak, Yes. once you're done, just let me know. I have something to add on to that. Yes. Yeah, So like we will talk about that as yeah, well. Like but here is also the stage that um, the team that Carlo has made win the UCL and the league. I don't think Hansi Flick is able to do that because I don't. Carlo's entire thing is man management, and he is a don. He is proper Don Carlo. So he can manage that team of superstars however he wants to. What Flick has done is absolute tactical masterclass along with management, but man management part of it is less
because Barca doesn't have those huge players right now. There's no Messi भाई also. वो ह्यूज प्लेयर्स No, but नामोसिया से ही खुद बन गए. you know what? Huge players खुद से बन गए. Yeah, I don't agree in this. No, no, as in no Sorry. big names. Not you don't have a huge ego player like a Jude Bellingham or a fucking Vinicius or हाँ, a मतलब वो Benzema to comparison वो तो भाई वो ऐसा है कि भाई फैमिली वाला गेम खेल रहे हैं वैसा ही है वो. हाँ, इन लोग को सब बच्चे हैं, इन लोग को डिसिप्लिन उतना सिखाने का दिक्कत है नहीं. What नहीं Don Carlo no. भाई he has done man management of those big egos and made them win league and UCL. But this year they were absolute trash. Like बट दिस Madrid, ईयर I don't पता know लग what गया, they did. दिस ईयर पता लग गया कि इन लोग मे भी हो सकते हैं बड़े स्टार होंगे, बट ये इनको बट वो बहुत दे इनके अंदर ईगो चढ़ा हुआ है, सबके अंदर बहुत उतरा है सबका ईगो not इस to बार. But I defend feel what the they way are. Barca has, I feel the way Hansi Flick has managed the stardom of these budding players has been very much better. Like to keep Yamal, bhai, he's a 17-year-old. The number of trophies he has right now, like it's fucking insane. Did you see the way he dressed up? Did you see the way he came, collected the trophy, was at the stadium wearing tutu sunglasses, colored his hair completely like blonde or whatever? Like you can't, it's very tough to stop a teen footballer who is in one of the biggest clubs in the world, almost can win the UCL at this point for the first time being a 17-year-old. That's fucking insane to take in. And along with him, players like Rafinha who have struggled so much and come and at this level. I was thinking like Leeds ka Rafinha to like abhi Barca ka Rafinha, kahan se kahan pahunch कहाँ gaya से hai banda. कहाँ, Bro, दैट्स Lewandowski, अ जर्नी. bro, that's a Kubarsi at 18 is killing him in defense, man. At Hey, 18. Barsi, Kubarsi, Pedri, Pedri, Gavi. Gavi, yeah, like भाई everyone. मैं And क्या I'm बोलता हूँ. so भाई मैं एक चीज बोलना है हाँ भाई हाँ हाँ इसने हैंजी फ्लिक ने पेड्री का गेम मैनेजमेंट इतना अच्छा किया है भाई. हाँ. उसका जो पोटेंशियल जो निकालना था उसने परफेक्ट निकाला ये सीजन Yeah, में. जब Hansi Flick. उसको नहीं खिलाना है भाई उसने नहीं खिलाया. बोला कि तू बैठ. बट जब उसका था तब उसको भाई किया. फरहान भाई, टोरेस का करियर. हाँ भाई. हाँ भाई yeah, लिटरली सेव हुआ, उसका करियर तो yeah, सेव किया है भाई हांसी फ्लिक ने मेरे हिसाब yeah. से. Like मैं क्या look कह रहा हूँ also. कि ये सब बच्चे बच्चे हैं ना, तो हांसी फ्लिक एक्ट्स लाइक अ, वो होता नहीं वार्डन, अ स्ट्रिक्ट वार्डन, Gordon, कि हाँ, सालो वो हाँ. तुम टीचर है भाई, ना वो खेलो, तुम टीचर अपना जैसा है. पैर को नीचे रखो सालो, तुमको उड़ने की कोई जरूरत नहीं है. ऊपर से फिर कुछ ऊपर नीचे करते होंगे इन लोग पार्टी शार्टी का, तो सबके तो माँ बाप एकदम कनेक्टेड है इन लोग, एक So क्लोज no, the सर्कल age है. difference also matters, no, in both teams. हाँ, Madrid don't have such young players. Madrid have थोड़ा old players, थोड़ा legendary players अब बन गए. पर यहाँ कहीं पे कहीं, प्रॉब्लम होती है ना, यहाँ पे हाँ प्रॉब्लम वही वही, होती है. it is a problem एंड होता है. इट बट इज दिस वेरी इज अ गुड नेगेटिव फॉर मिक्स. बार्सिलोना इफ यू थिंक अबाउट कि बट एकदम बारसा यंग में टीम वही है. है. नहीं बारसा में वही है कि इट्स अ गुड मिक्स ऑफ यंग एंड एक्सपीरियंस Yeah, प्लेयर्स. yeah. Real Madrid is Experience who like, do you have? FDJ? I don't consider शेज़नी भाई रिटायरमेंट से आके साला 2 ट्रॉफी मार के गया. कौन? शेज़नी. हाँ, Chesney. Szczesny Yeah. Leva. Szczesny Leva are the Chesney main. Leva. Szczesny Leva, FDJ are the main who have won. Inigo भाई Inigo's career was done when he was at Athletic Club. हाँ. We got him for free Correct. and उसने भी kill किया है. फर्मिन लोपेज का भी क्रिच इज सेइंग फर्मिन लोपेज इज आल्सो दैट वन प्लेयर जिसका Correct. चल. Yeah. This guy hasn't played at all, na? This season, Christensen. नहीं उसका इंजरी बहुत रहा है. He's been injury ridden. हाँ. अभी Sadly. लास्ट गेम भाई फाटी को खिला रहे भाई. He's trusting फाटी No, आउट. they have to make him sellable also Yeah. because he will. वही कर रहे हैं उसका मार्केट वैल्यू बढ़ा रहे हैं बस. किसको खिला रहे, किसको खिला रहे, मैं सुन नहीं पाया. फाटी Fati, आंसू फाटी. अच्छा आंसू फाटी. ओ The next Messi was supposed to be but next Messi कोई और बन रहा है अभी. But let's move on to the incident that happened after the game. Before, 3 red. before. Okay, that also ठीक है, fine. Yeah. I mean, I don't know much about it to be honest. हाँ नहीं The मैं I referee have actually situation. उस जो रेफरी जो उसका I'm not sure how to pronounce his name. डी बुर्गोस करके आई थिंक वो रेफरी का नाम था. सो उसका ऐसा रहा है कि जब भी वो मैड्रिड या बारसा गेम्स में रेफरी रहा है 64% ऑफ द टाइम सिर्फ मैड्रिड जीता है. बट व्हेन वो बारसा के गेम्स में हुआ है 81% ऑफ द टाइम बारसा हैज वन द गेम्स. सो देयर वर अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स सेइंग दैट बारसा मैड्रिड के टाइम अगर वो रेफरी है तो देन He will it's going to also. be biased towards Barca and Real Madrid TV and all those channels and बहुत everything. बहुत नौटंकी They हुई है. bashed the fucking referee. उसके फैमिली तक बात पहुंच गई थी. वो बेचारा बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके रो दिया. हाँ हाँ, that was very sad. Yeah. So
एट दिस पॉइंट भाई वो रियल मैड्रिड बोलता है हम खेलेंगे ही नहीं, हमको खेलना ही नहीं फाइनल। भाई भाई ये बच्चे क्या हो गए। बचकाना बातें हैं, बहुत बचकाना चीजें हैं अरे सारी। That's what now you लिवर focus on such stupid things. मैड्रिड का वैसा हरकत है ना, Yeah. बैट मेरा है, मैं नहीं, मैं जा रहा हूँ। हाँ 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 मैं आउट हो गया, मैं जा रहा हूँ। आउट हो गया, मैं जा रहा हूँ। हाँ। हाँ ये तो भाई गोली नहीं है, ये तो ट्राई बॉल है, ये तो ट्राई बॉल आई थी, तुम गोल कैसे कर दिया भाई? and from what I thought that referee had decent calls during the game. Yeah, he called a very fair game. I It's not that he was biased, He had a pretty decent game. but of course भाई मैड्रिड के जो players they took it very personally. Yeah, I Really mean, were- like 3 red cards after the game. Vasquez being the leader, model leader for Vasquez, Jude and Rudiger got sent off. where was Vasquez and कहाँ है Vasquez? मतलब कहाँ से कहाँ गिर गया है आदमी, मतलब बुर्ज खलीफा से गिर गया आदमी. But like the Vasquez we knew and the Vasquez who is right now, and along with budding egoistic player Jude Bellingham and ये तो इनका तो पूरा, इनको हम्बलिंग बहुत जरूरी है, और उनको अच्छा ये सीजन हम्बलिंग हुए हैं। ये जो उड़ रहे थे, ये एकदम सातवें आसमान में थे इन लोग, इनको पूरा सब पता चला है कि नहीं, हमको हम उतने हम हैं अच्छे, बट हम उस कैलिबर के भी नहीं है कि हमको need to मतलब be हाथ बंद humble. करके हम जा सकते हैं। Like you know what the funniest part is? I feel like sorry, I'm just switching. Go for it, go for it. You were saying humble, like I don't know any Liverpool fan who is humble. Like everyone's always like at the edge, but I feel the team is like humble. I just had to say that. Okay, interesting observations I must say. But I तेरे को just लगता है कि wanted to say बारसा फैंस humble है? no. अच्छा, मेरे को लगा कि you're going towards that. The team is humble. The fans are not humble. The team is humble because they are young. इनको थोड़ा सा, और इनको जरूरी है ऐसा हैंजे They फ्लिक जैसा also एक are आदमी young. मिलना। Like Fans are not humble. no, fans are not humble. I feel these teams might be humble or whatever, like, but fans are not humble. But anyway, और but हम लोग 3 साल uh, में हम्बल हो गए, इसलिए है ना, हम लोग 3 साल में, 3-4 साल में हम लोग हम्बल हो गए पूरा। yeah, yeah. But what was I going to say next? Yeah, like Rudiger about the bottle throwing. Rudiger. Yeah, भाई Rudiger क्या आदमी exiting. नहीं है भाई नहीं, वो? उसने आइस का वो पैक रहे थे वो फेंका रेफरी पे, दो वो भी। Like unimaginable, अनसिविलाइज्ड बिहेवियर यू नो। uncivilized. और भाई उसके बाद तुम ट्वीट डाल के बोलते हो मेरे बिहेवियर के बारे में, भाई I'm तो sorry. पहले ही नहीं ये भाई, करते। ये विनीशियस वाला विक्टिम कार्ड खेलने का कोशिश किया गया है कि यार मैं वही खराब तो। खेला तो। और वो प्रिंसिपल सॉरी बोल दिया। हाँ, Vinicius would make it into a bigger thing. Yeah, Vinicius would be like Vinicius कि would be मैं काला ऐसा- हूँ इसीलिए तुम लोग ये हाँ, बोल रहे हो मैं ना, काला हूँ मतलब, इसीलिए तुम हाँ, लोग लफड़ा कर रहा है, ऐसा हाँ. कैसा। हाँ, Vinicius is brain dead at this point, man. Like विनाशक, anyway, I fucking विनाशक इज ब्रेन डेड। but really funny names from Real Madrid Hindi yesterday. या Cartus आई लव इट, आई and ऑलवेज लव इट। नहीं वो इट वाज आई थिंक क्या था, दद्दू वो Daddu, Carlo Daddu. कार्लो दद्दू Carlo Daddu. I forgot what was Ceballos. Like कुछ तो के Ceballos के था. बा के भाइयों। के भाइयों. Ceballos. Some funny names. आई रियली मिस, मतलब ये लोग बहुत रेगुलर पोस्टिंग करते थे पहले, एकदम हर गेम के पहले, और इवन दी बार्सिलोना Bring आल्सो यूज्ड that टू हैव अ in. पेज जो करता था। वो बेलिंगहम को पक्का पक्का बबल गम बना दिया था बबल गेम में। गम, बबल गम, बबल गम। Correct. But एकदम whoever correct. is the next manager of Madrid has to figure out how to manage भाई this. बहुत टट्टी है, बहुत टट्टी है, आपको टट्टी साफ करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद आप Yeah, बहुत This- टट्टी साफ this करने पड़ेगी. 30 Carlo is almost See, out to be the you have Brazil to get a manager. right back. You have to get a right back. That's not even a तो question. ये मेरे को समझता नहीं रियल मैड्रिड इतना पैसा कहाँ डाल रहा है। भाई अम्बापे की गांड में डाल रहा है तो पैसा। मेरे को बोलना नहीं था वो, बट दे आर डूइंग दैट। रियल मैड्रिड का राइट बैक और एक आर्सेनल का स्ट्राइकर क्यों नहीं आ पा रही है दोनों क्यों नहीं पोजीशन। हो रहा है? जरूरत नहीं है भाई, उनका तो अपने No, आप में but ही वो but after discounted Liverpool चल रहा है Merino. winning the league, trend to Madrid is almost I think done हाँ now. हाँ, इट्स डन, इट्स डन। उनको मिल गया, उनको उनको एक राइट बैक प्रोलिफिक आदमी वर्ल्ड क्लास मिल गया उनको, राइट बैक। और अभी Bellingham उनको लॉन्ग टर्म प्लेयर मिला है। and Trent हाँ, together ट्रेंट इज व्हाट 24 25 toxicity in the club. ट्रेंट इज 29 29? I think No, so. I नहीं don't भाई, think so. भाई they him and अपना रीस जेम्स आर ऑफ सेम एज इफ आई रिमेंबर, 25 26 समथिंग। 26 होगा, 26 होगा। हाँ, वही बोल रहा हूँ। वो पीक में है भाई।
हाँ एंड हाँ वो पीक में है देख ही हैज आल्सो अचीव्ड एवरीथिंग ही नीडेड इन इंग्लैंड Yeah, इंग्लैंड की सब जीत चुका है सो द हाँ, नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली मैड्रिड फॉर हिम yeah, everybody does the same. एंड Only Bellingham एक दूसरा प्रजाति का निकल के आया. मैड्रिड इज काइंड ऑफ लाइक द फरारी ऑफ फुटबॉल Hmm. Ah, ठीक है Hmm. मतलब Unfortunately. नहीं मेरे को I एक will और never चीज say. सिर्फ मैड्रिड का बोलना था, साला गेम हारते या कुछ भी होता है बोलते हमारे पास होसेलू जैसे प्लेयर्स नहीं है। अबे गांडू लोग, तुम जाके खरीदो ना, होसेलू जैसे प्लेयर्स नहीं है। तो होसेलू कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, ठीक है ना, उसको जितना मतलब फ्लेक मिलता है ना, मैं गलत जितने टाइम मैं से उसको मेरा गोल एक और मारा है प्लेयर वो का आप नाम गिनवाएंगे लूंगा। नहीं. लुक डियोंग हाँ, वो अंडररेटेड सीजन था वो लूक डियोंग भाई का। गजब लुक्का गजब खेला डियोंग, आई रिमेम्बर वो बार्सिलोना हिंदी वाला लुक्का डियोंग बोलता था उसको. लुक डियोंग बड़ा सीजन ही है क्रेजी आउट लूक ऑफ द ब्लू डियोंग, ना, आउट ऑफ द ब्लू, साइनिंग भी आउट ऑफ ब्रो द ब्लू किया वो ही सीजन भी वाज उसका था. द होसेलू बिफोर होसेलू। हाँ हाँ अरे भाई उसको देख के ऐसा रावी तक बोल दिया कि अच्छा ठीक है टिकी टाका रहेगा बाजू में ऐसा लॉन्ग बॉल स्पैम रूट करो वन वो बोला मेरे को उसको ही लॉन्ग देना है। बॉल स्पैम करो टिकी टाका होता रहेगा तुम लोग लॉन्ग बॉल स्पैम टिकी करो टाका तुम लोग अपने जब बॉल रख रहे हैं तब करो, बट एक बॉल करनी चाहिए डायगोनल, नहीं तो लंबी एक रूट वन मेरे को पीछे से मांगता है, बस ये वाला सीन भाई था उसका. ये फ्री में हम प्लेयर्स लाते बट साले क्या खेल के जाते हैं यार। ब्रैथवेट आल्सो क्या है रैंडम आके सीजन याद भी नहीं है सब प्लेयर्स एट दिस क्रिश इज पॉइंट. आस्किंग, क्रिश इज आस्किंग, ये तो प्लेयर्स भी फ्री में लाते हैं तो पैसे जाते कहाँ हैं? मैं भी वही जानना चाहता हूँ, रियल मैड्रिड कहाँ जाते हैं ये पैसे? भाई एम्बापे वाला पैसा कहीं तो होगा यार आई डोंट एग्जैक्टली नो. एग्जैक्टली। Young building, I don't know, like, oh, damn. बट डूड अब वही नहीं है कि होगा. तुम 2 साल में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और तुम जाने दे रहे हो, भाई ऐसे नहीं चलता है। भाई एंड whoever is coming has to solve this Vinicius Mbappe problem they cannot play together फिनिशियस एंड एम क्रापे. एक तो दे कैनॉट प्ले टुगेदर उसके ऊपर बोथ ऑफ देम आर लायबिलिटीज both of them are एंड liabilities बोथ ऑफ देम हैव फकिंग बिग ईगोस। और कितना ऑफ साइड होते हैं भाई, इन लोग तो ऑफ साइड का ठेका लेके रखे ऑफ साइड होने के पीछे. ये दोनों हमें स्पॉन्सर कर दो. ये दोनों Yes. ये दोनों ट्रैक बैक नहीं करते दे डोंट पुट इन द शेप नाइदर Never, never. फिनिशियस और एम्बापे Hmm. एंड वो दोनों अगर नंबर्स प्रोड्यूस नहीं करे देन इट्स अ बिग इशू भाई वही सेम चीज अगर तो हमारे इसमें देख, हांसी फ्लिक मारेगा, बच्चा रहा बड़ा रहा भाई, मारेगा ट्रैक बैक टपली कर। टपली मारेगा चट. वो But वो यमाल को ट्रैक बैक करा था भाई, तो आप पीछे। हां एग्जैक्टली but एटलीस्ट आप, हाँ चलिए अब, हाँ बोलो sorry, फिर मैं I बोलूंगा. was just saying quick predictions. Who could be the next coach for Madrid? जाबी अलोंसो जावी Xavi अलोंसो, जावी अलोंसो, इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं कर Fine, सकते. Lever- unanimous decision. भाई Yeah, लेवरक्यूसन तक Leverkusen बोल दिया CEO, yeah, also, yeah, coming from there, coming from Jabi, Leverkusen का CEO ने ही बोल दिया कि हम जाबी को जाने देंगे and That was a useless question that everybody knew. Yeah. I mean, it's like आसमां है गीला क्यों, पानी नीला तुमको नीला क्यों. जा ही सकता था बट तुम लोग को सही आंसर देना है बहनचोद, सही हाँ. आंसर देना है तुम्हें. एक क्योंकि मिनट, कोई तेरे को मतलब नहीं, गलत आंसर चाहिए? देके ना क्या नहीं करोगे. नहीं, तेरे को गलत आंसर देता सैम एलरडाइस। हाँ चलो, Woo! I think we should play these kind of games, like you know, give the wrong मजा answer. आता सैम एलर्ड बिग सैम टू मैड्रिड, भाई उसका तो कत्ल हो जाता, पिच में हार्ट अटैक हो जाता. You are underestimating the. भाई रॉय हॉटसन होता, उसको भाई चेयर वेयर में बिठा के रखना पड़ता। रॉय हॉटसन तो वो गुस्तावो फ्रिंग का बाप होता है ना उसमें, क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग बैड में टंग 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 वो वाला बनता है रॉय हॉटसन कुछ टाइम में. हेक्टर सलामंका हाँ मैं नाम भूल गया था. I say Graham Potter to Madrid. चलो यार छोड़ो यार भाई, मूड खराब कर दी भाई से यार. मैड्रिड का जो रूमर्स उठा था दैट वाज आल्सो Hey, लाइक that was such a small किसका? tiny rumor. यर्गन क्लब टू मैड्रिड बट आई हाँ नो हाँ हाँ, उठा तो अच्छा था. वो डेड हो नहीं गया। वैसे, बट मेरे हिसाब से हो सकता था, मतलब ऐसा था कि नहीं होगा वो तो अलग बात है कि वो क्लियर कर दिया क्लॉप के मैनेजर, क्लॉप का आई गेस किसी ने तो क्लियर किया, क्लॉप टीम के साइड से किसी ने क्लियर किया था. बट इट कुड हैव बीन एक ऐसा ऐसा मतलब मेरे हिसाब से एक अच्छा ट्रांसफर, मतलब एक अच्छा मैनेजर होता फॉर रियल मैड्रिड एनी डे. दैट वुड हैव वर्क हाँ वुड हैव वर्क. हाँ वही उसको राफा बेनिटेस की बात चल रही है, बैक भाई राफा बेनिटेस, राफा मैनेज बैक. कम फिर ऑन. तो भाई Claudio अवेनेस Ranieri. टेस्ट एक टाइम पे किया भी है किया है हाँ, मैनेटेस ने किया है हाँ, एक 20 टीम पे किया 14 है. 13 14 आई गेस, प्री प्री ये ना क्या बोलते हैं, जिडान, प्री जिडान सीजन.
But I think only one player, not player, Zidane has the ability to shut down big egos. तो Obviously, but कितने बार बनाओगे आप मतलब जिडान को? कितने बार एग्जैक्टली कितने जिदान बार बनाओगे? जिदान का ना उससे जिदान भी का मतलब फंडा खून चूस चूस इज के जिदान का फंडा इज वेरी सिंपल। जिदान पहला टाइम आया जीता, इज लाइक कि अच्छा मैं निकल रहा हूँ, तुम लोग रिबिल्ड करना, नहीं रिबिल्ड नहीं, मैं मैं तीन बार जीता पहली बार में वो, उसके हाँ बाद हाँ अगले पर टाइम। जीता, फिर बोला हाँ कि मैं निकल रहा हूँ क्योंकि अभी ये प्लेयर लोग बुढ़ा हो रहा है तो मेरे को रिबिल्ड नहीं करने का है, तुम लोग करो रिबिल्ड, बाद में देखा जाएगा। फिर थोड़ा सा रिबिल्ड हुआ, फिर आया वापस, फिर जीता। अभी बोला कि अच्छा अभी तो ऐसा मॉड्रिच बुढ़ा हो गया, क्रूज बुढ़ा हो गया, रोनाल्डो निकल गया, तो अभी कैसा ऐसा कैसा मैं मैनेज करेगा, मैं जा रहा है भाई भाई तुम लोग रिबिल्ड करो, फिर मैं कभी आएगा। फिर मैं आऊंगा फिर। फिर वो नहीं करता है। वो डायलॉग है ना फ्रॉम हंगामा, मैं फिर आ गया समथिंग दैट वो शक्ति फिर कपूर का। दूसरा डायलॉग मैं आखिरी बार आया हूँ, मैं आखिरी बार आया शक्ति कपूर। ओके, शक्ति कपूर। या ये आदमी रिबिल्ड करने को तैयार नहीं कि तुम टीम क्यों बना के करेगा दो। रिबिल्ड? ही इज नॉट दैट लेवल ऑफ हाँ, कोच, तुम बना के दो ही इज टीम, नॉट दैट लेवल ऑफ अ कोच। मैं जितवाएगा। यार ये नहीं देखना Bro, मुझे। Krish is saying Didier Deschamps to Madrid would be good. ओह, could be दैट्स अ वेरी नाइस, nice. दैट्स वेरी नाइस। भाई साउथगेट टू मैड्रिड वुड बी सिक। भाई भेजो भेजो भेजो, मैं तो बोल रहा हूँ भेजो भेजो। शिफ्ट उसको ना, ऐसे ऐसे मतलब गिफ्ट बॉक्स में पैक करो और ऊपर में से रिबन लगा के ऐसे भेजो, नहीं लो भाई मैं जाओ देखो। नहीं, शादी 500 के तो लोग हैं भाई, या फिर खुद हम उसका फ्लाइट करके मास्क देंगे। करके उसका मुंह पे लगा दे। भाई बारसा वाले खुद फ्लाइट करके देंगे, बोले भाई तू जा। भाई बार्सिलोना पीपल आर गोइंग टू, उनके कितने लीवर जितने बचे हैं वो फंड करेंगे लीवर उखाड़ उखाड़ के कि भाई ये तो रखो तुम अपने लीवर। बट आई गेस दो सीजन के बाद आई गेस बार्सिलोना आई गेस फाइनेंशियली थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, अगर यही आप फॉर्म कंटिन्यू करते हो। एटलीस्ट 2 सीजन तो आपको फिर भी लगेगा यहाँ से, आई फील सो। एंड आई कैन डेफिनेटली सी द टाइड्स आर टर्निंग इन दी ला लीगा एटलीस्ट। सो यू नो मतलब वी आर सीइंग रियल मैड्रिड इज नाउ थोड़ा सा उनका फॉर्म, अब वो ये डिपेंड करेगा अगला मैनेजर कौन है और वो कैसे मैनेज करता है। एंड बार्सिलोना के लिए एवरीथिंग इज गुड एंड आई होप सो दैट देखते हैं क्या होता है आगामी बॉल में, पता लगेगा इवेंचुअली। अभी उनका कुछ खराब नहीं हो सकता, दे जस्ट नीड टू रिप्लेस लेवेंडोव्स्की, दैट्स अबाउट इट। Yeah, 11, and they will find apt replacements. Gyökeres is already there. You have so many names floated. आर्सेनल जा I रहा है। mean, I don't talk about this ever. पैसा okay. पैसा नहीं है। अरे He's such a good यार, player. I really hope he flops at Arsenal because अच्छा डन हो रहा है क्या उसका आर्सेनल? I mean done Almost. हो सकता है, हो सकता है। And what if he comes to Chelsea? You will say the same thing. कि I hope he flops. नहीं चाहिए We मुझे। are in a few months we are getting back to be all players being linked to Chelsea and United. No man, I hate this point. Like it's the मेरे worst. को भी नहीं भाई, I would to request मेरे को specifically to नहीं है, तू UEFA. तो हर 2 मिनट हर में No no, भाई हाँ हाँ ये प्लेयर आना ये चाहिए। हर अरे दो मैं नहीं दिन बोल में, रहा, मैं नहीं आई नहीं, हर 2 दिन में तुम दोनों शुरू, अरे ये प्लेयर लिंक्ड है, अरे ये प्लेयर भाई लिंक्ड है। देखो, Please, मैंने please. अपने आप को, मैं तो देखो मैं पहले भी बोला हूँ इस स्ट्रीम में, अभी भी बोल रहा हूँ कि भाई आई वांट यूएफए टू पुट अ ट्रांसफर बैन ऑन अस। अगर नहीं भी हो रहा है तो भी लगाओ सारा ट्रांसफर बैन, 2 सीजन का लगाओ, 1 सीजन का नहीं। We have, by the way, stat. I think I forgot the stat actually, but like it was like we are in loss for 2 straight seasons. We 400 are मिलियन, मोर देन 400 मिलियन समथिंग लॉस है yeah. दोनों का। भाई तुम्हारा बोली चूतिया हाँ वो अपना, तो है ही चूतिया, वो भाई तो वो घंट चूतिया है वो भाई। वुमेन्स का क्या, श्रेयस मैं तुझे बोला था, हाँ वुमेन्स का जो लीग था कुछ तो कब वो कुछ फाइनेंशियली दिखाने के लिए Yeah, वो he कर was रहा था, trying to make it into some sister something something कुछ तो समथिंग। था एंड उसका। इट गॉट डिनाइड। Yeah. भाई भाई हम पागल तो हो तुम। हम तो अपना होटल अपनी को अपने को ही बेच देते हैं अपना प्रॉफिट को दिखाने के लिए, ऐसे तो चूतिए तुम हैं लोग नहीं। हमारा जैसा सिचुएशन में मत आओ भाई प्लीज। आने वाले हैं, जितना मॉर्टेजिंग किए हैं ना हम, आने वाले हैं हम, नेक्स्ट बार्सिलोना हम ही हैं, कोई टेंशन मत लो। ऑल्सो जस्ट टेकिंग आलू बिरयानी's comment, we have to congratulate him, at least he's been the only sane Liverpool fan that I know personally, so congratulations। yeah, आलू बिरयानी is here। ले रहे हैं भाई, कमेंट ले रहे हैं आप, टेंशन मत लो, ले रहे हैं आपका हम लोग बहुत भाई एक डिस्कशन इसका चाहिए थी इसलिए। Congratulations. We will give you a guard of honor at Stamford Bridge. गार्ड ऑफ ऑनर देना तो अच्छा ही है, rather than letting them win at our place। Yeah. प्लीज गार्ड ऑफ 5-1 ऑनर लो, एनी डे टेक एक गार्ड अपने ऑफ को ऑनर। पूछना है भाई, खिलाना। आलू बिरयानी का एक्चुअल नाम क्या है भाई, लीग जीत का ये नाम सी तो क्या है। कुछ ये राज भी लकी के साथ चला गया, जाने दे लकी के साथ ये राज भी तो नहीं चाहिए। भाई लेकिन
Yeah, I mean, Slot might as well play Chiesa for the Chelsea भाई game. मेडल के लिए भाई बेचारे को बच्चे को खिला Yeah, रहे हैं। so Chiesa is at 4 games that he has started. He needs to play 5 to get the medal. There are 4 more games left. If they at least play Chiesa for 1 or 2 more games, he can be eligible to receive a medal. भाई प्लीज दे दो, बेचारा इतना खुश है, इतना अच्छा लगता है उसको देख के, और उसको लिवरपूल कितना पसंद भी है भाई, उसको दे दो भाई मेडल, बेचारे. बट And from one winners to other winners, Mr. Harry Kane wins his plate. Oh, yeah, that plate. DFB Pokal? I guess he has one. No, what is that? बुंडेसलीगा बुंडेसलीगा Bundesliga. टाइटल. नहीं, one more had that he has won ना. हाँ हाँ. पहला हाँ, पहला वो होने वाला था. अब you were only saying me ना. नहीं नहीं, वो नहीं, वो डीएफबी तो नहीं है ना इस साल, वही तो है. अच्छा. बुंडेसलीगा जीतने वाला है. दे आर एक आउट तो ऑफ डीएफबी पोकाल. हाँ, wrong, क्या? एक तो कोई तो फोर्थ टियर ना थर्ड टियर का Yeah, कोई yeah, टीम some हारा like था yeah. Some small ass team only like beat Bayern. इन And पोकल. even in that game, when they will lift the trophy, he will be suspended. Kane will be Good riddance, Tottenham. Good riddance. Tottenham curse is real. श्रेयस एक हाँ अपडेट कृष्ण ने दिया है हाँ बारसा हाँ, फैमिली 8-2 हार गए हम, 8-2 हार गए हैं बारसा हम. फैमिली 8-2 एग्रीगेट पे हारा है अरे भाई, हराया है सॉरी खत्म. अब अभी हमारी लॉरेन जेम्स आउट हो गई यार. वो होती तो कुछ चांस होता, वो तो पूरी आउट हो गई यार हमारी टीम. फिर वही तुम लोग मिले हुए एफए कप फाइनल में, मतलब आप फूटी. भाई 5 साल हो गए टीम को एग्जिस्ट करे हुए, अभी तक एक बार भी चेल्सी को नहीं हराया है. यही टीम मिलती है एफए क्यों? कप फाइनल. अब आपको तो फिर अब चांस भी, अब तो मौका भी है, दस्तूर भी है. 8-2 हार के आ रहे, मोराल की तो लंका लगी पड़ी है. अब हराओ हराओ ना, अब हराओ. चेल्सी नहीं हो पाता भाई. आर्सेनल वार्सेनल हार जाते हैं, चेल्सी नहीं हो पाता अपने से. चलो अभी नहीं, आगामी कभी होगा. अभी वैसे अभी हम लोग को भी आवर लास्ट होम गेम इज दैट वी विल बी होस्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड चेल्सी. तो वो देखना होगा. लास्ट अच्छा होम last गेम है अपना, अपना अच्छा. third. लास्ट होम गेम. हाँ, बिकॉज लास्ट मैच वी आर प्लेइंग नॉटिंघम फॉरेस्ट अवे. सो हाँ हाँ, हमारा एनीवे, लास्ट यूनाइटेड या. होगा. सो Yeah, let's move on quickly to the poster also. हाँ, ओ अरे यार, थंबनेल तो मैं भूल ही गया उसके बारे में बात करना. शायद माय अवर अपॉलॉजीज. इतनी सारी नहीं, चीजें हो गई बीच में. वी गॉट कैरीड अवे We got carried away, indeed. We got carried away. And even in when we got carried away, even we also ended up hitting the side wala flag eventually, जो हमारा thumbnail पे भी था. It was horrible, I know, Shreya. I know it was horrible. It was meant to be. Khair, again, one very sad news, I must say, because ever since. So for me, I'm just कोई starting. मर नहीं Uh, गया. हाँ, क्या कोई हुआ? मर नहीं गया. नहीं तो मैं अपना एक एस्पेक्ट बताऊंगा ना. पहले तो मैं ना एक टाइम में फुटबॉल से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था. फिर मैं थोड़ा सा वापस इन माय इंजीनियरिंग ईयर्स में बहुत ज्यादा कनेक्ट हुआ फुटबॉल से. एंड उस सीजन पे, जिस स्पेसिफिक सीजन पे एक टीम जो ऑल ऑफ अ सडन राइज करी थी, इट वाज लेस्टर. एंड इन दैट सीजन जेमी वार्डी वाज द टॉक ऑफ द टाउन. He was getting all the accolades and he was winning all the plaudits from the pundits, from from around the footballing world, that a new striker. And particularly उसी season के बदौलत he broke into the English team as well. I remember 2016 Euros में. So Jamie Vardy, as we all know, after 13 long years with Leicester, has finally decided that he will part ways at the end of the season. Leicester is anyway going down for in next season. वो भी एक है. I guess they are finishing 19th if I remember correctly. 18th are Ipswich, yeah. So yeah, it's very sad that मतलब for me he has been one such player जो मतलब पिछले at least 10 साल की फुटबॉलिंग हिस्ट्री में has been very relevant for whatever that he has done. So yeah, he's going he down. has proven that even if you start late हाँ, you can still be a 28 यार. yeah, and small clubs also have like legends, man. Like all these players are bloody legends. yeah, legends any day. He, Jamie Vardy with his celebrations, with his shit talking, He uh, is always going to be remembered for that 11 game consecutive scoring record. without doubt. We just saw that video like And he broke RBN ka record only, na? that. I'm not sure. हाँ. He broke RBN ka record by scoring 11 goals in a row. भाई मेरा तो थोड़ा सा अलग डिफरेंट कनेक्शन है इसके साथ, वार्डी के साथ, की वार्डी की बीवी और उन्हीं की बीवी का लफड़ा. Oh, that Ah. Rada. I even thought of that. I even watched a documentary. I was so fucking drunk.
I watched a documentary of Wayne Rooney's wife and fucking Jamie Vardy's wife having a battle. Jeez. Wow. Absolute cinema. Absolute cinema. But yeah, that is one thing. कमेंट्स में उठाया जाए तो किसी को भी जीतने दो, पहले आरसीबी को हराओ, इंडीड आरसीबी को हराओ, No, जीतनी why? चाहिए आरसीबी, नहीं I जीतनी चाहिए आरसीबी. Wait, just did saw the they win? table. कि Yeah, RCB RCB they beat Delhi at their home. I can't believe it, dude. That's fucking insane. That's Hmm. crazy. और क्रिश इज कमेंटिंग नहीं रहे वार्डी, दैट्स लेस्टर के प्लेयर. दैट मीम. ये 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 VARDY. तेरे लिए ही था भाई, जो हिसाब से तूने स्टार्ट किया ये तेरे लिए ही था. Yeah, it's very much best character of last 10 years in Really Premier good League. party memory. Oh yeah, sorry. I mean, I Krish is mean, also. I mean, kicking that flag, Yeah, the that FIFA flag. that is one. And then his celebration, man, always Yeah. एक box करके यार Wait, Always हाथ से when गिर he like जाना. tells the player to that answer he's won that, a Premier League, Yeah, and that is a that is too. I love that shithousery the most. When he especially shows the badge on स्पर्स the स्पर्स पे जाके ऐसा. Spurs पे हाँ. जाके भी वो दिखाया. भाई उसका ये सीजन का रह चुका है, वो हाफ टाइम तक कुछ नहीं आता है, बाहर रेड बुल पी के गोल मार के जाता है. Yeah, Yes, Red yes, Bull. What yes, the this fuck? season. Hardy and his unofficial sponsorship with Red Bull. एंड ही इज लाइक, भाई मैं रेड बुल पीता हूँ मैच के पहले और मैं गेम खेलता. But where do you think Vardy goes from here? I रेक्सम. guess, हाँ कहाँ? He's a good. रेक्सम. Oh yeah, Wrexham is also one story that has to be talked about, man. 3 consecutive promotions, 3 or 4, I guess. They have to stay a few years in हाँ championship. हाँ भाई, वरना अभी अगर अगले साल आ गए तो फिर बहुत गंदे खत्म होने वाले हैं उसके बाद वाले सीजन में प्रीमियर लीग में. True. भाई बट तू सोच, अगर वो आते भी है फोर फोर प्रमोशंस Yeah, भाई. that will be the only thing that will achieve that like 4 consecutive I mean, even promotions. Coventry had a season in championship, and after that they came. They were also doing consecutive. Sorry, Coventry, nahi, my bad. I meant Ipswich. I mean, at least so what can be an ideal path for Wrexham to come above maybe in Premier League is like Seasons in 2 championship. to 3 seasons, and that too staying in the middle, and then हल्की सी improvement करके you go to उनका the. भी उनका भी इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे चैंपियनशिप में. भाई वो तो करते हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट, उन लोग खुद तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं. ऐसे तो और भी So, लगेंगे I think. no, here's the problem. Here's the problem that happens. So, till League One, you can invest for a very good amount because owner investment का एक अलग part रहता है, एक percentage of sale रहता है, which is allotted to the club to do the this thing, मतलब transfer खर्चा. Championship से that rule changes. Championship से the entire cap comes into picture. Cost cap, ए- yeah. एक कॉस्ट कैपिंग का पूरा एक फंड आ जाता है, आपका बिलिंग का पूरा फंड अलग हो जाता है, ट्रांसफर मार्केट का ऑडिटिंग का पूरा फंड अलग हो जाता है. Yeah. So Wrexham will not be able to spend as crazily as they were able to in League 2, League 1. उनको स्मार्ट साइनिंग्स. Plus, obviously, the players that you need to come till championship cannot take you winning championship into PL. That is a different breed of players, and also not only that's a different breed of player, that's a different breed of costly players. Yeah. Yeah. There is a huge cost difference between a good championship player versus a decent or a good League One player. But good championship player तो तुम लोग भी लेने वाले हो अब. Almost. Liam Oh, Delap Liam or they're taking Yeah. Delap or what? Not I very was excited referring about to it. We already Hoylund had. There are so Why? many transfer rumors flying around. We have so much to also discuss later on as well about transfers. But Yeah. Let's talk about Sorasa Seria. yeah, Yeah. Yes. Can I start by saying Milan beat Inter and reached the finals for the Coppa d'Italia. Yeah, कोपा इटालिया, but yeah. Coppa Italia. Yeah, I don't. Yeah, The- I You knew were it was correct. wrong. You were correct. Almost correctness there. Nice. Coppa Italia. Yeah. On behalf of Mittul, we will be doing Serie A news today. Unfortunately. So, yes, Milan beat Inter in the derby to reach Coppa Italia. Very unlikely of Milan playing that way and going ahead.
But yeah, like Inter losing out on, so many people have been saying the same line that Inter have been losing out in the crucial stages of them winning the बहुत second. गलत टाइम में इनका फॉर्म बहुत डाउन हुआ है. time pe they are falling out from, yeah, like they only have one competition to win right now. No, two. They still have two, but Napoli is ahead of Inter in the on the table. ना ना ना, so सेम equal पॉइंट्स में points. है बट एक मैच GD. कम है Take match, नेपोली का. sorry, sorry, I mean take match. जीडी Sorry, I में भी mean, इंटर इज वे अहेड ऑफ नेपोली, सो इफ एक Napoli is. मिनट, नापोली हैज वन गेम इन हैंड, सो उनका Yeah. वही है, फायदा है. दे आर अहेड. अभी मान के वर्चुअली यू कैन से कि दे आर मतलब अहेड. it's now on Napoli's court. The हाँ, ball is बॉल इज on. ऑन. या but guess who they lost to today, guys? रोमा. रोमा. रोमा, Yes. द Can रिसर्जेंस we ऑफ रोमा. clap for Sir fucking क्लॉडियो Claudio रनेरी. Claudio Ranieri? नाम नहीं आ रहा था. Claudio Ranieri. Yes, let's clap for Claudio Ranieri. I think longest time that they have been without a loss. I think 15 to 16 games without a loss. They have either won or drawn their games. So Ranieri at that budhapa is killing it. So I also say Ranieri to भाई. Yo, he killed it with Leicester back in the day. So yeah. I mean, Bro, I love Aloo Biryani ka comment. As Carragher said, Internazionale. भाई वो कह रहा अगर इंटरनेशनल. Oh my god, with Del Piero, no? Oh my god, that video with Del Piero. And he's trying to talk to Rafael, and Rafael is like, what the fuck are you saying? Yeah, I do. I mean, I'm not sure of the goal scorers for today. To Roma, yeah, Roma won. Matthias Suler, he scored Suler. today. Yeah, correct. But But yeah, dude, like Inter is almost I'm very happy that they have a slump in form. Inter versus Barca coming up This week. soon, soon, very also soon. यूवेंटस ने आज मोंजा को हरा ही दिया अच्छे से. और Juventus lost the last match against Parma. So Juventus are having also a very weird. But they won today. They had to. They won today, and in the other semi-final, it was Bologna who beat Atalanta Right. to go into the final for the Coppa Italia. So well done. All these teams are playing really, really good football. Bologna, Atalanta. Bologna without that to Bologna से ही आया था Mota. मोटा बोलोनिया से आके जाके भी बोलोनिया like still going into the has retained something, ऐसा बोल सकते हो आप. हाँ. yeah, like two good teams I think in Coppa Italia. I mean, I'm looking at the table. So 8th में Lazio है 59 points के साथ. Fiorentina is also at 59 points with on 7. 6th में Bologna है 60, Roma है 5th में 60, Juventus है 62 4th में. तो ये 4 से लेकर 8 अभी बहुत ओपन है मेरे हिसाब से. And we can actually see maybe Lazio or Fiorentina who can jump into the European spots. It's very much possible. Again, 4-5 games, last 4-5 games, it's the run-in. जैसे Premier League में बोलते हैं, it's the run-in. So it is also the run-in in every league almost. But yeah, that is about Serie A. Do you have to you have anything else to say? Yeah. Mittul is also commenting अच्छा, क्या बात? on behalf of Serie A news. Yield his red card. Yield his red card today. First half we are red card. Damn, dude. I think 45 के आसपास जब half time के उधर, I'm not sure what By happened. Monza, man, so fucking disappointing, dude. But dude, Nico Gonzalez and Kolomuani scored. Wow. Colomani, man. Oh, man. that fucker. भाई कोलोमोनी फकर क्यों हो गया? Oh, sorry. Okay, sorry. I वो उसको फ्रांस अर्जेंटीना याद आ रहा है, लग रहा है. My bad. I sort of missed क्यों something. फकर? I forgot. नहीं, Forget. Let's move ahead. कौन सा प्लेयर सोच रहा है? नहीं, मैं उसका भी नाम भूल गया साले, जिसका मैं उसको सोच रहा था. If Napoli win today, it will be difficult for Inter to get the. Who is Scudetto, Napoli which playing? very That is a good question. Napoli has an easier run of. Yeah, Napoli has an easier run. Yes. They are playing Torino. Napoli has a pretty easy run. Scott McTominay तो भाई मतलब रहेगा भाई. तो McTominay और Lukaku trophy जीत Imagine if McTominay wins the fucking Scudetto.
तू वो I वो will laugh at you forever. लुकाकू वापस जीतेगा. Lukaku छोड़ भाई भाई. सबसे मुझे बड़ा तो चीज तो I लुकाकू want है यहाँ पे. to win. तो No, यू अरे नो nothing. एक्चुअली दोनों पे हंसा जा सकता है, मतलब भाई आप भाई तुम्हारा भी नहीं प्लेयर नहीं उधर ही है मुझे ना. इससे ज्यादा हंसना है. You have a Chelsea player there also, no? Billy Gilmore. बिली गिलमोर इज देयर. हाँ ऑब्वियसली गिलमोर इज हाँ, देयर. totally forgot about his existence. बट या मैम इधर इधर मैक्टोमिने उधर बेस्ट प्लेयर ऐसा Anthony. सोफा स्कोर पे 8.4 स्कोर लेके नपोली को जिता रहा है और इधर एमोरी बॉल चल रहा है कि प्लीज सर एक रेड कार्ड खा लीजिए तो हम गोल मार सकेंगे. भाई लेजेंड बिना रेड कार्ड का अपना चलते ही नहीं है. पूरे अप्रैल में 2 गोल मारे हैं. 5 मैच में 5 मैच 2 गोल पीएल में. तुम्हारा नॉमिनेशन भी 15 सेकंड का ही रहेगा. दिस इज बैक टू दोस डेज जहां पे वो एकेडमी वाला गोल ऑफ द मंथ लेके जाता था क्योंकि पीएल में गोल ही नहीं मारा. LOL. That is a bad downfall, man. फिश इज सेइंग चेल्सी के प्लेयर्स पूरे यूरोप में, हम तो बोलते भी हैं, एक पत्थर लेके मारो एंड 90% चांस है कि वो प्लेयर चेल्सी में कहीं ना कहीं अरे रहा है. मेरे से एक्सपेक्ट भी मत करना कि मुझे याद रहेगा कोई हाँ कौन का. वही बात है. So बट Aruna is asking one question. I have a question that Inter lost to Milan and Roma, and Barcelona beat Madrid and win a trophy. So do you think it changes the view of game? I guess a better answer will be from Osani because he is I'm his still team is not playing. going to take Inter lightly. कहीं Inter वो का कहीं वो defense आपके साथ वो तो नहीं कर रहे हैं कि छलावा तो नहीं दे रहे हैं आपको, देखो हम तो हार रहे हैं, तो फॉर्म खराब है, आप तो अपना वो हरा के see, जा सकते हो. Barca, ये नहीं Barca's इतना offense is good, but so is इनका defense. ठीक है, recent 2 games doesn't justify what they've been doing the whole season. 2 games से भाई तुम करोगे तो भाई it's ये a नहीं हो very पाएगी. it's a very close game that is going on in Scudetto. I think the only good thing is the first leg is in Nou Camp. No? No, I think that's a bad thing for No, Barca. it's not new ये camp by the way, मतलब हाँ at वो Barcelona's home. वो में वो अबे ये तो जान है टीचर साले चल. चलना है. सारे Technically you're incorrect, इसलिए but yeah, we are playing first leg at home. हम्म. If we take a good lead, First if we leg take at a home good lead, is Oh, फर्स्ट लेग एट होम 100% थोड़ा सा तो डाइसी है इंटर के लिए बिकॉज एट होम बारसा विल बी इन अ मूड आफ्टर but वो ये कि हम if we take a good lead, a 2 या 3 goals का lead भी रहा ना, हम भले 1 गोल से हार जाए इंटर के होम पे, I'm fine. It's just But that Mitul is agreeing, Osani. Although you are not willing to, I get it. You are going to you're trying to downplay here. Mitul is agreeing that 100% it does. Inter looks so exhausted. They are looking tired on the pitch. Let's see if they are exhausted mentally too or just physically. So I mean, it's possible that Inter. तो क्रिश का भी कमेंट देख ले भाई, हम भी हमारे प्लेयर्स भी अभी 120 मिनट खेले कल ही. अरे यार डाउन क्रिश पे मत करो सानी. हाँ क्रिश कौन सा फैन है? बार्सिलोना है, बार्सिलोना हेलो. फैन है. But वो ये कि I'm saying you still can't discount Inter. I understand that they've उनके players exhausted है, but they'll show up when it matters. हो सकता है. But Barca will also show up only. हाँ हाँ. Also, Mithul is saying that so unprofessional from Yildiz got a red card in the 46th Yeah. minute. First half, Straight straight red red and card. they face Bologna Bologna and and Lazio. Oh my God, that they're is fun. very tough for Juventus without a proper manager. अच्छा fine ठीक है. Their manager is okay only. ठीक है sorry. Okay only. हाँ. हाँ मतलब ठीक है यार मितुल तेरा मैनेजर इतना भी खास नहीं है बट ये सीजन चला लो कैसे भी अगले सीजन कोई ढंग का ला लेना. हाँ. टूडोर हाँ. टूडोर है ना उसका नाम. He got 2 door. You got to do it. But yeah, that is with the Serie A, and I guess we have wrapped up almost all the major conversation lots points. of things gonna happen next week also there's सबसे still बड़ी बात तो देर इज 1 तारीख को मैच है आई गेस इन लोगों UCL. का. यूसीएल है अगले वीक. yeah, सेमीफाइनल्स UCL आर. एक तारीख को क्यों होगा थर्सडे है 1 तारीख को. आई डोंट हाँ. नो, मतलब वेडनेसडे नाइट थर्सडे लगने वाले टाइम पे इंडिया टाइम में 1 तारीख है. ठीक मे है बी रात. हाँ. हाँ and also FA Cup when is the final because the एफए finalists कप are तो out. मई एंड अच्छा वो में. मई में लास्ट होता है मई 17th में. 17th में. हाँ या 17. 17 में.
अब So तो PL और PL सब तो लीग्स हो ही PL गए is हैं, dead but rubber. we will be discussing like at least Europa CL spots who will be getting most next of week, them. and also transfer rumors. Let's get into that also. ऑल्सो इस बार का प्रीमियर लीग थोड़ा सा, प्रीमियर लीग का ट्रांसफर रूल थोड़ा अजीब सा है, अजीब सा मतलब Yeah. इन्होंने बाइफरगेट कर दिया ट्रांसफर विंडो को दो अलग अलग सेशन में। World उन्होंने Cup, जून Club जून World वाला Cup वो will be very, लाया ना बीच में अभी। हाँ हाँ, क्लब वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने किया है। yeah, Club World Cup is coming. Okay. Oh क्रिस wait, what did? क्रिस से सिटी का एक ट्रॉफी सीजन तो हम डिजर्व करते हैं। हाँ सॉरी मितुल, टूडोर हाँ अच्छा है भाई, 3 wins 1 loss. Yes, but I think you guys need better यार. अरे अरे whatever makes your boat flow, हाँ whatever makes your boat float। sorry I fucked up। But हाँ मैंने नहीं बट वो समझ गया तेरे को जो बोलना था। I'll tell from experience, होगा टूडोर अच्छा, बट उसको ओले नहीं बनाने का। हम्म क्या? I didn't even hear you. उसको ओले नहीं बनाने का, ऐसा कि अच्छा तुम इंटरिम अच्छा किया तो ले लो मैनेजर से, ऐसा नहीं तो करने अभी का। मतलब हाँ, ओले को भी आप, आई एम सीइंग विशाल, आप कैसे ओले को भी क्या यू ओले आर को थ्रोइंग डिसरिस्पेक्ट शेड्स किया एट जा ओले। रहा हाँ है? हैं, ओले बेचारा मैं फुटबॉल मैनेजर खेल खेल के अपने आप को सीखा, भाई ये दिन पोस्ट के लिए कि विशाल उसको बकेगा नहीं, मतलब वेरी वेरी बैड। Good पोस्ट point, good पोस्ट point. Yes. फर्गसन द मोस्ट फन आई हैव हैड सीइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड ये अंडर सब ओले। झूठ है. अब देयर इज नो सेविंग ना, आपने उसको ओले से कंपेयर कर दिया टूडोर को। ऑब्वियसली स्टिल देना नहीं चाहिए था। I'm not saying it was not fun, but it should not have been given. मतलब उस आदमी ने आपको आपके पिछले कितने साल के प्रीमियर लीग में हाईएस्ट बताया पोजीशन में लाके खड़ा किया था। बताया है भाई, टॉप 4 लेके आया है वो हाँ बंदा. नहीं तो, और ये मजाक है भाई, बड़े ओले के मजे. साथ मजाक नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये गलत है, गलत हो गया ये, बट खैर ये हमारी कन्वर्सेशन थी। आई गेस इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू डिस्कस, आई गेस, और वी आर डन फॉर द वीक, आई एज आई सेड। so thank you very much to all the comment section में जो भी कमेंट बाजी करके मितुल अगले तो इसमें ही आ जाना. अगले वाले में आ जाएगा, अगले वाले में आ जाएगा, हो सकता है मितुल, हो सकता है, आई एम स्टिल लाइक होपफुल कि अगले वाले में वो आ जाए। बट यस, यू आर लिसनिंग टू द एपिसोड नंबर 59 ऑफ ऑफसाइड टेक्स। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अपने कुछ अच्छे फुटबॉलिंग फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे यू नो हम हमारा जो हम बात कर रहे हैं वो सबको पहुंच सके। इफ यू लाइक आवर वर्क एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, हमारी इंस्टाग्राम आईडी, नॉट ओनली ऑफ आर पर्सनल वंस बट हमारे जो ऑफसाइड टेक्स एफटीबीएल। मेरे को इतना डिस्टरबेंस हो रहा है ना कि मैं आउटरो दे ही नहीं पा रहा हूँ, मालूम, बिकॉज ऑफ दिस मेरी आंख वहीं जा रही है बार 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 बार। तो तो हाँ, मैं कहाँ तो यू कैन फॉलो अस ऑफसाइड टेक्स एफटीबीएल में। वो नहीं आने वाला श्रेया, उसको मत कोशिश करो, forget it। हाँ, and we'll be back next week, a lot of footballing action as I said, so please keep an eye, football को देखते रहिए, because football is one thing Oh that unites us all। wait, हाँ Scott क्या है? McTominay scored Nice. as we were ending the stream. He scored। कि ये बस क्या बोलते हैं, हमारे हम रोज बोलते हैं ना, 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपकी जबान में रहती है, तो वही हो गया, हम लोग ने बोला मैकटोमिने मैकटोमिने, ही एंडेड अप स्कोरिंग राइट अवे। खैर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, गुड नाइट, बाय बाय।